So friends, today's first topic is in respect of, I will say, the loan transactions or the cash transactions. To curb the circulation of black money, to curb the creation of black money, the government wants to put a circulation or transactions in cash. Friends, if the transactions are through banking channels, they always have a, you can say, trail. Government, if want to find out that what is the source of that particular money, is able to find out. But in case of cash transactions, it is next to impossible to find out the source of such cash. So through income tax law, if I talk about, the government has prohibited or have put restrictions on cash transactions by various provisions. Some of them are applicable for every person, whether that particular person is carrying on any kind of business or not, whether that particular transaction is in relation to personal aspects, and some transactions are having bearing only if you are carrying on business or profession. So let's go one by one and have a discussion. Friends, purpose ये है कि आप practical life में you should take care of this particular type of transaction कि unknowingly हम ऐसा कुछ काम नहीं कर दें कि बाद में we may have to face some consequences or notices from the income tax department. So that we should take care of. Let's start with, friends. The first and foremost, if we talk about, is in respect of borrowings and repayment of borrowings. उस पे कुछ गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है. Now if you talk, there are two persons are involved in a particular transaction. One particular person is called lender in practical life, and second person is called borrower. Now whether the restrictions put in by the income tax law are applicable for lender or are applicable for borrower or for both. Any idea, friends? आपने शायद ये पढ़ा भी हो कि इतने रुपए से ऊपर का लोन नहीं लेना कैश में, अदरवाइज कुछ कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो सकते हैं इनकम टैक्स लॉ में. You may have read or may have heard that particular kind of law regarding income tax. Income tax में ये provisions है ये and all sort of things. एक हमारे पास जवाब आया that this particular restriction is applicable for both lender and both. लोन नहीं लेना. Anyone having idea whether what is the amount that has been put as restriction? Obviously, friends, for the very petty amounts, such restrictions should not be there. Okay, we are having one view that is restriction is amount is rupees 1 lakh. Okay. Another aspect we are getting that is 2 lakh. We are getting again another view, majority views goes towards 2 lakh. Any idea about the governing provision? किसी ने कोई section number सुना हो? Okay. So friends, let's start with. When there is a borrowing, when the restrictions are put in by section 269 SS. 269 SS. It says that crossing a particular threshold limit, a loan transaction cannot be of and by way of cash. Now, friends, as per section 269 SS, restriction is put upon borrower and not on lender. Like, for example, I am taking loan from you of rupees 5 lakh, and you're giving that particular loan amount of rupees 5 lakh in cash to me. Then whatever the consequences are there for violation of section 269 SS is on me and not on you. The limited applicability I'm talking about section 269 SS. But yes,
If I say to the income tax department that I made the borrowings in cash from you, then department may make inquiries from you that what is the source of cash in your hands. Obviously, I have violated section 269 double S and I will be liable for consequences, but department may ask the sources of that particular cash in your hands. And in case you are not able to substantiate, you are not able to explain from what is the source of that particular cash in your hand, then department may treat that rupees 5 lakh as your income and accordingly tax. That sections are section 68 to 69D, and that is part of our today's and tomorrow's session. Now, obviously, that we are also going to discuss. But if we talk about section 269 double S, the transaction of loan, so whatever the restriction is put by section 269 double S is applicable on borrower only and not on lender. So it is not applicable for both. And the quantification, the amount beyond which this section will come into picture, this section will be triggered is rupees 20,000 only. Further, this section is applicable for all persons, whether any business or not. Like for example, if you are taking loan for your personal purposes, it may be possible. Still section 269 double S is applicable. That is a brief we have discussed. We will go into detail. Now the question arises, what will be the consequences? Like if I have took a loan of rupees 5 lakh in cash from you and the department comes to know, then what will be the consequences on me? Any idea, friends? मैंने आपसे लोन ले लिया 20,000 से ज्यादा by way of cash. Section 269 double S का violation है, there is no doubt in that particular aspect. Then मेरे साथ होगा क्या? Friends, any provision have effect only and only when there are some consequences. अगर लॉ में उस पर्टिकुलर वायलेशन का, उस रेस्ट्रिक्शन का अगर कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है तो फिर कर लो. You must have seen that on some pillars or some walls वहां पर लिखा होता है that पोस्टर लगाना मना है, that you cannot put any poster on that particular wall or particular pillar. तो ठीक है, लगाना मना है, बट इट विल हैव, पर फिर भी वहां पोस्टर लगे होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. और सेकंड एस्पेक्ट है वेदर द गवर्नमेंट गोज फॉर सच कॉन्सिक्वेंसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्सिक्वेंसेस और नॉट. वो भी एक चीज प्रैक्टिकल लाइफ में बेटर करती है, बट दैट इज अ गवर्नमेंट कॉल. Okay, we have the perfect answer from Mr. Kumar Subramaniam, that is penalty of equivalent amount. Friends, there is a misconception in the market, even with some professionals also, कि अगर आपने more than 20,000 का लोन ले लिया, borrowed rupees more than 20,000 in cash, then it will be treated as your income. It is not so. Friends, section 269 double S के violation का there is only and only one consequence, that is penalty. That is penalty. It cannot be treated as part of your income just because of the fact that if you have taken loan in cash. Yes, if obviously you are not able to explain that from whom you have taken the loan. You are saying that I have taken loan from Mr. X. Now, who is Mr. X? I have no idea. Then obviously that amount can be treated as your income because you are not able to explain the source of that particular money, and the section 68 to 69D will come into picture. But friends, if we talk about that only the fact that I have taken loan in cash, then only consequence is that the department may levy penalty equivalent to amount of the loan taken in cash. And friends, always remember, a penalty under income tax law is never automatic. For levying the penalty, the department is supposed to issue a notice that why such penalty should not be levied upon you for violation of section 269 double S. And you have to give reply if you have reasonable cause, a necessity, a reason behind that, that these were the circumstances that I was forced to take loan in cash. In that case, penalty cannot be levied.
Like for example, a person having a medical emergency. Friends, the hospitals does not accept cash more than 2 lakh rupees. Now, why the restriction of 2 lakh rupees that we are going to discuss today also? Now, there is a medical emergency for which rupees 5 lakh is required to be paid to the hospital. Hospital either accepts, friends, online transactions like debit card, credit card swipe, or cash, or maybe online transfer, but in that case you need to produce the relevant details. They have to cross verify whether this is received in their bank account or not, and all sort of aspects. Generally they insist for credit card, debit card swipe, or for cash, but they do not accept cash more than rupees 2 lakh. Now there is a medical emergency, amount is required to be deposited with the hospital, then the reasonable cause that you have to borrow funds from your kith and kins. There is no other option at all at that particular aspect. And if you are able to substantiate that reasonable cause, penalty cannot be levied for violation of section 269 SS. So for every penalty under income tax law, a show cause notice is required. Penalty is never automatic under income tax law. And obviously the penalty proceedings will be initiated only when the department comes to know that you have made the violation of section 269 SS. Now, technically, when section 269 SS is attracted, you are making borrowings from Mr. A on 8th of July 2022 of rupees Y. Already outstanding loan rupees X from Mr. A. You have already borrowed amount of rupees X from Mr. A in past, which is outstanding as on date. Now, as on date, you are going to borrow rupees Y from Mr. A. Then violation of section 269 SS will take place only and only if X plus Y is greater than equal to 20,000. Friends, in this case, X may be zero. Outstanding amount may be zero. And as on date you are borrowing rupees 20,000 or more in cash, then the violation will take place. If there is an outstanding amount and you are making borrowings, and today's borrowings including earlier borrowings results into 20,000 or more, again there is a violation of section 269 SS. I am assuming the borrowings are in cash. Now let's have some example. Already outstanding today's borrowings total. Is there any violation of section 269 SS? If yes, then penalty 100% off. Then for how much amount penalty can be levied? Already outstanding zero. Today's borrowing 12,000 cash. Total 12,000. Is there any violation? No. Penalty not applicable. Already outstanding zero. Today's borrowings are 22,000 cash. Total 22,000. Is there any violation? Yes. Penalty can be levied 100% of 22,000. Already outstanding 10,000. Whether cash or check does not matter. Already outstanding loan was by way of cash or check or banking channels does not matter. Today's borrowing 12,000 cash. Total 22,000. Is that 20,000 or more? Yes. Is there violation of section 269 SS? Yes.
for which amount penalty can be levied? 12,000. Friends, today's borrowings are rupees 12,000 and not 22,000. If today's borrowing results into outstanding loan to be 20,000 or more, in that particular case, penalty can be levied under section 269 SS read with section 271D for on the amount which is borrowed today, Already outstanding amount 80,000, whether by cash or check does not matter. Today's borrowing 2,000 cash, total 82,000. Is there violation? Yes, penalty can be levied for 2,000. Now you might be having a question in mind that what would happen if that 80,000 was in cash? So friends, whenever you go for a particular amount of borrowing, on that date you have to check out whether there is any violation of section 269 SS or not. Obviously, when you had borrowed rupees 80,000, on that date you need to check. Now, whenever you borrowed 80,000 or part of that, in our case, that can be treated as Y. So for every borrowing, you treat that particular amount as Y and old outstanding amount as X and check out whether there is a violation or not. Katiravanji, I'm coming to that. Katiravanji is asking, what about repayment of loan which was taken by bank and if repay by cash? That we are going to discuss. First of all, we have to check out what are the violations, what is the general law, then we'll go for exceptions. I hope I'm clear with section 269 SS when the violation takes place. So friends, already outstanding amount plus current borrowings, if that results into 20,000 or more, then we need to check out whether current borrowings are in cash or not. If they are in cash, then there is a violation equivalent to the amount which is borrowed today, Okay, friends, let me show you the law. Now, friends, these sections were challenged before the court, constitutional validity. Whether by way of income tax law, restrictions can be put upon cash transactions when they do not have any kind of impact over the income calculation that we have discussed, friends. If you make borrowings in cash, there is no impact over the income at all, then whether such kind of restrictions can be imposed upon by the income tax law. Income tax law is meant only for the computation of income and computation of tax. The court said that the government, by virtue of Constitution of India and list 1, list 2 and list 3, I hope you must be knowing that particular list provided by the Constitution of India. Regarding list 1, that is called union list, there are several matters on which the central government is authorized to make laws. Friends, one of the list matter of that list 1 is that to curb circulation of black money. In that respect, the court said that it is not necessary that for every matter which is enumerated in list 1 union list, separate law is prepared. By virtue of a single law, multiple purpose can be ensured, fulfilled, which are provided as part of list 1. So say that these are sections are constitutionally valid and not at all beyond the constitution at all. Let's see, friends, what is the law? No person shall take or accept from any other person, hereinafter referred to as the depositor. They have used the word depositor instead of the word lender. Any loan or deposit or any specified sum. Now, this restriction is in respect of three type of amounts. First is loan, second is deposit, and third is any specified sum. We will see later on what is specified sum. Otherwise, then by account pay check or account pay bank draft or use of electronic clearing system. Only three modes are permitted by the income tax law, that is account pay check or account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as may be prescribed. Friends, electronic modes are like UPI, Bharat Pay, whatever are there that can be used. If
the amount of such loan or deposit or specified sum, or the aggregate amount of such loan or deposit and specified sum is 20,000 rupees or more. आपने आज लोन लिया, अगर वो अमाउंट 20,000 और मोर है, तो फ्रेंड्स आपको इन्हीं तीन ही मोड से पैसा लेना है, अदरवाइज नहीं लेना. On the date of taking or accepting such loan, today are borrowing rupees 4,000. Any loan or deposit or specified sum taken or accepted earlier by such person from the depositor is remaining unpaid. The amount or the aggregate amount remaining unpaid is 20,000 or more. Already existing loan was rupees 20,000 or more, and today you are borrowing something. If it is already outstanding amount is 20,000 or more, then whatever you are borrowing today, that is covered up by section 269 SS. Or the third one, the amount or the aggregate amount referred to in clause A together with the amount or the aggregate amount referred to in clause B is 20,000 or more. Already existing plus current borrowings makes it 20,000 or more. Again, on the current borrowing, this particular section is applicable. So friends, section 269 SS is putting upon a restriction. It is not providing the consequences, it is putting upon restriction. Provided that the provision of this section shall not apply to any loan or deposit or specified sum taken or accepted from, or any loan or deposit or specified sum taken or accepted by. Friends, they have used both the words from or by. If in these particular cases one of the party means either borrower or lender is government, then this section is not applicable. If one of the party is government, any banking company, post office, saving bank or cooperative bank, or corporation established by a central, state or provincial act, any corporation, like for example, if I talk about Institute of Chartered Accountants of India, that is established by central act, any government company or such other institution as may be notified by the central government in this particular regard. So basically, if I talk about, generally there are four: government, banking company, corporation established by central, state or provincial act, or any government company. If one of the parties, now there is another exception, provided that the provisions of this section shall not apply to any loan or deposit or specified sum where the person from whom the loan or deposit or sum specified is taken or accepted, that is borrower, and the person by whom the loan or deposit or specified sum taken is accepted, that is borrower, are both having agricultural income and neither of them has any income chargeable to tax under this act. If they are pure agriculturalists, in that particular case, this section is not applicable. Both the borrower and lender must be agriculturalist. An agriculturalist for this particular section means pure agriculturalist. They should not have any income which is chargeable to tax under this act. Friends, if I go by this particular proviso, literally word to word, then this particular exception is impossible. Reason being, if agriculturalist is having a saving bank account, he must be having saving bank interest, and that is part of income chargeable to tax. So if I go by literally, then this particular proviso is impossible to apply in the practical life. फ्रेंड्स, यहाँ पर अमिताभ बच्चन कवर अप नहीं होंगे इन दिस पर्टिकुलर प्रोवाइजो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, मस्ट बी हैविंग एग्रीकल्चरल इनकम एंड नाइदर ऑफ देम हैज एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट. उनकी और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस. तो अमिताभ बच्चन जी इस पर्टिकुलर प्रोवाइजो में कवर अप नहीं है. अगर वो लोन लेते हैं कैश में तो सेक्शन 269 SS अप्लाई हो जाएगा. Now penalty section, friends, that is section 271 capital D. If a person takes or accepts any loan or deposit or specified sum in contravention of the provision of section 269 SS, he shall be liable to pay by way of penalty a sum equal to the amount of the loan or deposit or specified sum so taken or accepted. Then friends, penalty kitni hai? 100%. Friends, there is no language which suggests that the department has power to levy penalty less than 100% even. Either there will be no penalty
or 100% penalty. There is no other option. Any penalty imposable under subsection 1 shall be imposed by the joint commissioner. Friends, under income tax law, various authorities are there for levying this particular penalty. Only the joint commissioner is authorized to levy the penalty. Any other officer cannot levy this particular penalty. Let's have a brief discussion on the hierarchy, jurisdictions, officers. Friends, you must have heard the word assessing officer or ITO. Friends, when we talk about assessment, you must have heard word scrutiny assessment. कि case select हो गया, department is making the assessment, scrutiny. Friends, the assessment can be done by assessing officers. Now, who could be the assessing officers? Friends, if I talk about the lowest level who looks after income tax matter under the income tax department is inspector. But inspector cannot be the assessing officer. Over inspectors, there are income tax officers, we called ITO. They can be assessing officers. Over we have AC and DC, assistant commissioner and deputy commissioner. Assistant, AC assistant, deputy commissioner. Can they be assessing officer? Yes. Above them, these are joint commissioners. These are joint commissioners. Can they be assessing officers? Yes. Friends, they can be assessing officers, but only if they call a particular file from IT or AC or DC. If you are holding a particular PAN, your PAN jurisdiction lies with either ATO or ACDC. It is not with Joint Commissioner. Joint Commissioners are not normally assessing officers, but they have right to call a particular file from the IT or ACDC, and in that case, Joint Commissioner can assess, can make the assessment. But whenever you have to check out with whom, with which particular officer your file lies with, आपकी फाइल, आपका पैन नंबर किस ऑफिसर के पास है, that will be either ITO or ACDC and not with joint commissioner. But in case of section 271D, penalty can be levied only by joint commissioner, not by ITO or ACDC. The lawmakers have provided the safeguard that the lower authorities cannot impose liability upon you, penalty upon you. If ITO or ACDC during the course of assessment comes to know that you have violated section 269SS, they have to make recommendations, they have to inform JC, and only joint commissioner can levy the penalty. Friends, in case notice is issued by income tax officer or ACDC that is null and void, you can challenge that notice, and on the basis of that notice, penalty cannot be levied. So that is part of professional checking, whether that particular officer is authorized to do this particular aspect or not. If not, then that particular notice is null and void. Now coming to specified sum. Friends, हमने जो examples discuss किए, the examples what we have discussed in respect of loan. Now these are applicable in case of loan, deposit, and specified sum. And please check what do you mean by the specified sum. Friends, you have to take it in the practical life. Specified sum means any sum of money receivable, whether as advance or otherwise includes consideration or includes security deposit, in relation to transfer of an immobile property, whether or not the transfer takes place. Ultimately, immobile property का transfer होता है या नहीं होता है, does not matter. If in case of a immobile property, you are proposing to transfer, and in respect of that, you are receiving advance or full and final consideration or security deposit in respect of transfer of immobile property, and if you receive that by way of cash and that amount makes your total receipt 20,000 or more, then you are liable for violation. And friend, this is one of the major violations which are done by various persons in the practical life. Friends, in personal capacity, if you are taking loan or deposit, generally that particular transaction is not reported anywhere. And in practical life, the department does not come to know
that whether you have taken loan or deposit or not in your practical life, except in case of business. But in case of immovable property, if you have accepted cash, friends, whenever you go for registration of sale deed, whenever you draft sale deed, in that sale deed, the consideration details are generally provided and supposed to be provided. That by which particular mode the payment has been made, the date of payment, and all relevant details you must have seen. And in case of your sale of immovable property, if sale deed contains that consideration in his cash and it is rupees 20,000 or more, friends, it is instructed by the income tax department to the registrar of properties that you have to inform this kind of transaction to us. Friends, registrar are supposed to inform this particular aspect to the income tax department, that this is the particular sale date in which consideration is discharged by way of cash and which amounts to 20,000 or more. And friends, in that cases, the department issues notice to the assessees that you have accepted consideration in cash, why the penalty should not be levied for violation of section 269 SS. In case of immovable property, friends, you have to take due care that you are not accepting cash at all for making the transaction. Friends, otherwise we need to establish the reasonable cause. What was the reason that you were supposed to take that particular consideration in cash? Friends, loan could be in cash and there could be reasonable cause. For immovable property, I am not able to foresee any kind of such reasonable cause. Why the transaction of immovable property cannot be even delayed for a single day? What is the urgency in that particular case? Now, friends, anything you would like to ask this particular borrowings? We have discussed one aspect, that in case you go for borrowings. Another aspect is repayment of loan. Hanji friends, can we proceed with repayment of loan? Again, there are two parties, lender, borrower. जब लोन लिया तो दिस इज द फंड फ्लो. सेक्शन 269 डबल एस किस पे एप्लीकेबल था? बोरोवर पे. नाउ देयर इज अ रीपेमेंट. In case of repayment, where is the fund flow? In this direction. Now, regarding repayment, the restrictions are imposed by section 269T. 269T. Now, if I talk about section 269T, it is applicable again. IUCG limit is 20,000 in case of immovable property. In case of immovable property transaction, the limit is rupees 20,000. The limit of rupees 10,000 you are talking about, that I will come to later upon. That is a different provision at all. Friends, repayment section 269T, again it is applicable on borrower and not on lender. And not on lender. Ayushi, I will come to that. Kindly wait for that particular aspect. Friends, on lender, if I talk about section 269 SS, section 269T, both are not applicable. So at the time of repayment, the borrower has to take care that he is not making repayment in cash. Not making repayment in cash. And friends, it does not matter. You cannot make an excuse that I made borrowings in cash and at that time penalty has been levied. So penalty should not be levied again when I'm making repayment in cash. It is not so. अगर आपने कैश में लोन लिया, पेनल्टी इज देयर. आप कैश में रीपेमेंट करते हैं, then again penalty can be levied. So that you have to take care. Again, the threshold limit is 20,000 or more. Now, how this operates? If outstanding amount is 20,000 or more on the date of repayment, then whatever amount you repay, friends, section 269T is applicable. I am making repayment to you as on date, whatever the amount may be.
If outstanding amount before this particular repayment is 20,000 or more, section 269T is applicable. Outstanding amount 22,000. I am making you payment of rupees 4,000. Is section 269T applicable? Yes, applicable. Let's have a brief review of that particular section 269T. Mode of repayment of certain loans or deposits. No branch of a banking company or a cooperative bank or no other company or cooperative society or no firm or other person, that means every type of person is covered up, shall repay any loan or deposit made with it or any specified advance. In case the transfer of immovable property transaction gets cancelled and amount is repaid, then repayment must be by way of these three modes only. Received by it otherwise than by an account pay check or draft or in the name of the person who has made the loan, deposit or paid the specified ones, or by use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic may be prescribed if. Same provision, friends, same three parts. Already outstanding amount 20,000 or more that we have discussed already, and I think clear to you. Now for the banks, they have made a kind of clarification where the repayment is by a branch of a banking company or cooperative bank. Such repayment may also be made by crediting the amount of such loan or deposit to the saving bank account or the current account with such branch of the person to whom such loan deposit has to be repaid. अगर बैंक ने आपसे लोन लिया और बैंक आपको रीपे कर रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको चेक इश्यू करे, वो आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकता है. Provided further that nothing contained in this section applied to any repayment of loan or deposit or specified advance taken or accepted from. Friends, under section 269 there was from and by both. That means either of the party is government. But in case the repayment is there, then lender is out of these five, then there is no problem. Lender, like government आपको कैश में repayment नहीं कर सकती, but you can make repayment in cash to the government. Government, banking company, corporation, government company, that we have seen already. Again, penalty provision, friends, 100% penalty is there. Same can be levied by joint commissioner. Friends, anything would like to ask? So this particular, these two sections are applicable in respect of three type of transactions, that is loan or deposit or specified sum. So friends, immovable property के case में ध्यान रखना. Now the another provision we are proceeding towards. ध्यान से देखना friends, practical life. Friends, have you ever heard any particular situation कि hospital ने कहा कि मैं 2 लाख से ऊपर कैश नहीं लूंगा? Have you ever heard of or face any this particular kind of situation? कि हॉस्पिटल में गए, ट्रीटमेंट होना था, मेजर अमाउंट पे करना था, एंड हॉस्पिटल सेड सॉरी वी विल नॉट एक्सेप्ट मोर देन रुपीज 2 लाख इन कैश. मे बी सम काइंड ऑफ होटल्स, वहां पर कहीं गए हो या कहीं और खर्चा किया हो 2 लाख से ऊपर का. कार लेने गए हो, व्हीकल, और व्हीकल डीलर ने कहा हो कि नहीं जी मैं 2 लाख से ऊपर कैश नहीं लूंगा, अप टू 2 लाख यू कैन पे कैश, बैलेंस आपको तो चेक या डीडी वगैरह कुछ देना पड़ेगा. फ्रेंड्स, दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 269 ST. ध्यान से देखना. नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख और मोर. आप 2 लाख या उससे ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते. कैसे? बाद में आएंगे एबीसी पे. अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और सच इधर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में बी प्रेस. आप 2 लाख और मोर इन चार मोड्स के अलावा रिसीव नहीं कर सकते, और इनडायरेक्टली वी कैन से कैश में रिसीव नहीं कर सकते इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन अ डे. एक पूरे दिन में 2 लाख से ज्यादा आप एक पर्सन से कैश रिसीव नहीं कर सकते. इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन इन हाउ मेनी डेज? मल्टीपल डेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ क्लॉथ डीलर and I sold you a cloth for rupees 5 lakh by a single invoice on day 1. Now you are making payment to me 20,000 per day, and ultimately the cash payment exceeds rupees 2 lakh against that particular invoice. Is there a violation of section 269 ST? Yes. And friends, this violation is on the person who is receiving the money.
तो सिंगल ट्रांजेक्शन के रेस्पेक्ट में चाहे पेमेंट मल्टीपल डेज में हुई हो, if cash portion in that particular payment is 2 lakh or more, violation is there of section 269 ST. Multiple invoices are there issued over the number of days, but you are making payment to me in a single day, and that amount constitutes in aggregate 2 lakh or more, violation is there. Third one is quite interesting. In respect of transactions relating to one event or occasion from a person, अगर एक इवेंट के रेस्पेक्ट में आपसे पैसे मिल रहे हैं, the best example if I talk about marriage, you go to a particular banquet hall, you book banquet hall, you go for catering, you go for DJ booking, you go for flower decoration, you go for rooms booking also. And in that case, that particular banquet hall owner raises invoice separately for each and everything. Like for catering separately, for banquet hall separately, for DJ, flower, for rooms booking, each and everything separately. All invoices separately constitutes less than 2 lakh rupees. You make payment less than 2 lakh rupees per day. Whether there is a violation? Yes, friends. If particular transactions are there, multiple transactions are there, but they are in relation to particular one event or occasion, then they will be seen simultaneously. They will not be seen independently. In that case, also violation is there. And friends, this by virtue of this particular section, the hospital is not accepting cash more than rupees 2 lakh. Friends, provided that the provision of this section shall not apply to any receipt by government, banking company, post office, saving bank, cooperative bank. आप बैंक को पैसे देते हैं कैश में, फ्रेंड्स बैंक अकाउंट में कैश जमा करा रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम नहीं. Transactions of the nature referred to in section 269 double S. In case of 269 double S, section 269 ST is not applicable because there are restriction has been put upon of rupees 20,000 or such other persons as may be notified by the government. Penalty, friends, again 100% penalty is there, and that can be imposed by the joint commissioner. Friends, ये provision समझ में आया? And this is applicable for all kind of transaction, whether having any relationship with business or not. Business related है या नहीं है, matter नहीं करता. Friends, any doubt or query? Thank you, Ramesh ji. That is a negative confirmation is also a confirmation to proceed with. And thanks, Mr. Ramesh, that Mr. Ramesh is saying that there is no query. Now, friends, above three sections deal with a common man also. Now coming to such कुछ ऐसे provisions which are applicable only if you are running a particular business. Businessman पे restriction लगाई. कैसे restriction लगाई, friends? एक तो सेक्शन बनाया 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3. क्या कहा? If you are incurring any expense in relation to your business or profession for which you are making payment in a day by cash greater than 10,000. एक बिजनेसमैन को बोला that if you are incurring any expense in relation to your business for which you are making payment in a day greater than 10,000. फ्रेंड सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हर दिन मैं 9,000 रुपए पे कर दूं, एवरी डे आई पे 9,000 टू अ पर्सन, इज देयर वायलेशन ऑफ सेक्शन 40A3? नो. If you are incurring any expense in relation to your business for which you are making payment in a day and which is more than 10,000 rupees, then whatever the amount paid in cash is not allowed as business expense. अंडर इनकम टैक्स लॉ उस पर्टिकुलर कैश पेमेंट को, उस एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया जाएगा. When it is not treated as your business expense, your income increases. When your income increases, you have to pay to tax. Indirectly, government is saying that whatever the expenditure you are making in cash, उसके ऊपर हमें 30% टैक्स दे जाना. That's all. Friends, recipient of that money, उसके लिए वो taxable है.
आपने मेरे से बिजनेस पर्पस से क्लॉथ परचेज किया, यू आर अ क्लॉथ मर्चेंट, आई एम अ होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने आपको 5 लाख रुपए का कपड़ा दिया, यू मेड पेमेंट ऑफ ₹5 लाख टू मी। फ्रेंड्स, दैट 5 लाख रुपीज इज इनकम फॉर मी, दैट इज पार्ट ऑफ माई बिजनेस। बट आपके लिए वो 5 लाख रुपीज बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, बिकॉज यू आर मेकिंग पेमेंट इन कैश। So that is a restriction put upon by section 48(3), and we are making, if in case of marriage, if separate vendors are there and we are making paper to separate people. Okay, Ayush is asking in respect of section 269 ST that we are having booking from separate persons, like band, baja, barat, separate booking, banquet hall, separate booking. मैंने बैंकेट हॉल वाले से कहा जी केटरिंग मेरी होगी, आई एम एंगेजिंग सेपरेट कैटरर एट ऑल, सेपरेट वेंडर, देयर इज नो लिंक बिटवीन दिस टू, then what will happen? Obviously they are not part of same they are part of same transaction but different person. Friends, section 269 double s, section 269 t, section 269 st, section 48(3) are to be seen for every person separately, for every person separately. अगर मैं 4 लोगों से बोरोइंग्स कर रहा हूं, इफ आई एम मेकिंग बोरोइंग्स फ्रॉम 4 persons, then all 4 persons borrowings need to be seen separately, they will not be clubbed. Similar analogy with 269T, 269ST, section 48(3). फ्रेंड्स, अब 48(3) का ही भाई बंधु है क्या चीज? सेक्शन 43, उसका प्रोवाइसो। व्हाट सेक्शन 43 प्रोवाइसो सेज कि अगर आप बिजनेस पर्पस से, if you purchase any depreciable asset for which you are making payment in cash in a day greater than 10,000, then whatever the amount you have paid in cash will not be treated as part of cost of such asset. Like for example, I'm purchasing a particular car for my business for rupees 2 lakh rupees, and out of 2 lakh rupees I make payment in cash of rupees 50,000. Now, for the purpose of income tax law, whenever I'm going to calculate depreciation on this car, the depreciation will be calculated on rupees 1,50,000 only. This 50,000 made in cash will not be treated as part of cost of asset. उसके ऊपर मुझे depreciation का benefit नहीं मिलेगा. So friends, these are the restrictions which are put upon by various sections of the income tax law. Friends, in case of section 48(3) and section 43 proviso, there is no other consequence except that there's expense or depreciation will not be allowed. Now, Fred, there are some provisions, judgments in case of section 269 double SOT, जहां पर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने माना कि there is a reasonable cause, there is a reasonable cause कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी अदर देन अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और उस केस में कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कहा कि पेनल्टी लेवी नहीं होगी. So that you can go through if you want to, friends, for your knowledge purposes, कि how the law that is being interpreted by the tribunal or courts, किस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, किस प्रकार से उसको इंटरप्रेट करते हैं. Friends, do you want this particular file? आई थिंक पीछे हमारे पास एक क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज. आयुषी, इज दैट क्लियर टू यू, जो आप गुड्स और सर्विसेज का पूछ रहे थे? Okay, thank you, Ayushi. Friends, I have shared this particular file with you regarding this particular cash transactions. You can download, and we will share later on also as per our technology. Okay, friends, let's have let's second topic for the day, that is taxation of gift. Gift क्या है ये गिफ्ट? Friends, if I ask you to explain or to define gift, can you define it?
हाँ जी फ्रेंड्स, ट्राई करो थोड़ा सा कुछ डिफाइन करने का. Okay, there are some more friends who have joined, I think, the very first time today. Who have joined for the first time today. Do you have my mobile number, friends? Have you gone through the first and second session? Okay, no issues. Okay, we had a very perfect definition. If I talk about from Mr. Kumar Subramaniam, that is payment without consideration, out of goodwill or gesture. If anything will give someone in relation or not without any consideration, that is gift. Okay, that is good one also, Mr. Raji. So friends, the first and foremost condition for treating a particular amount or property as gift is that it must be without consideration. It must be without consideration. Now, when we talk about consideration, friends, consideration not necessary in terms of money. It could be in any form. Friends, regarding the words gift, regarding the word consideration, these are not defined in income tax law. And the nearest law, if regarding the word consideration, if it goes by, that is Indian Contract Act. And as per Indian Contract Act, even a promise to do something in future, or even my act not to do something, like I am stopping myself to do something, that is also a consideration. मैं आपके कहने पे एक पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा, that is also consideration. Like for example, I am constructed my own house. आप मेरे नेबर हो, आपने कहा जी ये पर्टिकुलर विंडो इस तरफ मत बनाओ, जस्ट अ रिक्वेस्ट, नॉट लीगली, एंड आई एग्रीड टू दैट. तो मेरा ये काम नहीं करना, दैट नॉट कंस्ट्रक्टिंग ए विंडो ऑन ए पर्टिकुलर लोकेशन इज नथिंग बट ए कंसिडरेशन. और उस एवज में हो सकता है आप मुझे कोई बेनिफिट दो, तो उस बेनिफिट के अगेंस्ट वो क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन. So when we talk about income tax law, friends, income tax law does not uses the word gift. It says if you receives money or specified property without any consideration, then that transaction of receipt of money or property will be taxable in your hands. Then these provisions are governed by section 56 subsection 2 clause number 10, and under that clause number 10 you will see that they have not used the word gift at all. But in practical life, we use the word gift to explain the nature of transaction in a single go. In a single go. Friends, if you go by the brief history, गवर्नमेंट ने देखिए फ्रेंड्स स्टार्ट किया था सबसे पहले गिफ्ट को टैक्सेबल करना ऑन 1st of September 2004. फ्रेंड्स उससे पहले गिफ्ट टैक्स नहीं लगता था अंडर इनकम टैक्स लॉ. If I'm not wrong, there was a separate act for levying taxes on gift up to 1998, and that was abolished in 1998. From 1998 to 2004, there was no taxation of gift at all. First of all, the government introduced provision clause number 5 on 1st of September 2004, but was applicable up to 31st of March 2006. They replaced clause number 5 with clause number 6, and they introduced another provision, but that was again applicable up to 30th of September 2009. Then they replaced clause number 6 with clause number 7. That was made applicable from 1st of October 2009, but up to 31st of March 2017. And from 1st of April 17, friends, the clause number 10 is applicable. Clause number 10. This is clause number 10 is applicable. So as on date, if you're going for a particular gift, you need to check out whether clause number 10 is applicable or not. Friends, brief history I'm telling you, क्या था? फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले ये आता है कि गवर्नमेंट को गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी क्यों करनी पड़ी.
Friends, the reason being the government realized that the many people have using this particular non-taxation of gift as a measure to convert their black money into white. Like मेरे पास कैश है, आपके पास बैंक बैलेंसेस हैं अच्छे, मैंने आपको कहा कि आप मेरे को चेक दे दो, आई विल गिव यू कैश विद सम मार्जिन्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आपने मुझे चेक दिया, आपने गिफ्ट डीड बनाई 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, मैंने दिया। गवर्नमेंट यूज व्हाट ये सोर्स क्या भी क्यों आया, मैंने कहा जी गिफ्ट, दैट्स ऑल, कर लो जो क्या करोगे। सामने वाला लिख के दे रहा है गिफ्ट है ना, अननोन पर्सन इज गिविंग गिफ्ट टू मी। मतलब थोड़ा सा absurd नहीं लगता फ्रेंड्स? एक अननोन पर्सन आता है और मेरे को गिफ्ट दे रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, बट द लॉ एग्जीक्यूटर्स, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाज बाउंड बाय द लॉ। इनकम टैक्स लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं था कि उस चीज को रोक पाते। तो इनिशियली जब क्लॉज नंबर 5 इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम अ पर्सन, अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हो 25,000 से ज्यादा तो वो टैक्सेबल होगा। इसका मतलब इंटरवेंशन वाज देयर, इफ आई एम रिसीविंग द गिफ्ट ऑफ ₹20,000 per person and I'm receiving gift from 100 persons, but from every person the amount is up to ₹25,000, then this provision is not applicable, there is no taxability at all. तो जिन्होंने फ्रेंड्स ब्लैक का व्हाइट करना था उन्होंने क्या किया, जैसे ये प्रोविजन आया तो उन्होंने कहा जी हमें तो 100 लोगों से 25-25 हजार रुपए गिफ्ट मिले, बताओ क्या करोगे। तो देन अंडर क्लॉज नंबर 6 उन्होंने कहा कि अगर आपको इन एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा मिलता है, इन एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा, चाहे सिंगल पर्सन से मिला हो और मे बी फ्रॉम मल्टीपल पर्सन, इफ द रिसिपिएंट इज रिसीविंग मोर देन 50,000 इन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, द फुल फाइनेंशियल ईयर, देन होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा पर ईयर, उसके बियॉन्ड पॉसिबल नहीं। बट फ्रेंड्स क्लॉज नंबर 5 और 6 में ओनली मनी गिफ्ट वॉज टैक्सेबल। बाय इंट्रोड्यूसिंग क्लॉज नंबर 7, और फ्रेंड्स यहां पर भी एसएससी कौन कवर अप थे, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बट यहां पर इन्होंने मनी गिफ्ट प्लस प्रॉपर्टी गिफ्ट टैक्सेबल कर दिया। कंडीशन वही रखी, ग्रेटर देन 50,000। प्रॉपर्टी वर्ड को डिफाइन किया जिसमें 10 टाइप ऑफ असेट्स कवर अप कर दिए, 10 टाइप ऑफ असेट्स कवर अप कर दिए। फ्रेंड्स उसके बाद क्लॉज नंबर आपका 7A आया जिसके अंदर क्लोजली हेल्ड कंपनीज, क्लोजली हेल्ड का मतलब फ्रेंड्स प्रैक्टिकल लाइफ यू कैन से प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, फर्म और एलएलपीज को अगर शेयर्स का गिफ्ट मिलता है तो उसे टैक्सेबल किया गया। तो फर्म और कंपनीज के लिए द ओनली गिफ्ट वाज टैक्सेबल ऑफ शेयर्स गिफ्ट, बट फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ द मनी गिफ्ट वाज टैक्सेबल एज वेल एज प्रॉपर्टी गिफ्ट, एंड प्रॉपर्टी मेंट 10 टाइप ऑफ असेट्स। फ्रेंड्स बाद में जाके इनको भी रिप्लेस कर दिया, एंड एज ऑन डेट क्लॉज नंबर 10, क्लॉज नंबर 10 कवर अप एनी पर्सन, एनी पर्सन मींस इंडिविजुअल से लेके कंपनी तक, एवरी टाइप ऑफ पर्सन इज कवर्ड। अगर मनी गिफ्ट रिसीव होता है या प्रॉपर्टी का गिफ्ट रिसीव होता है, एंड प्रॉपर्टी मींस फ्रेंड्स 10 टाइप ऑफ असेट्स प्लस 1 बाय वे ऑफ फाइनेंस बिल 2022, 2022 के अंदर इसके अंदर एक और जोड़ दिया है, अगेन मोर देन 50,000, देन दैट इज टैक्सेबल। तो एज ऑन डेट देखें फ्रेंड्स, इफ एनी पर्सन रिसीव्स एनी गिफ्ट whether it is terms of money or specified 10 or 11 properties, that is made taxable in the hands of the recipient. I think in brief it is clear what is section 56 to 10 talks about. We are going to discuss in detail each and every aspect. Kumar Subramaniam is saying that ESOPs are issued to employees by companies. Kumar Subramaniam, when ESOPs are issued, they are generally does not said to be first of all without consideration. They are issued to employees by virtue of their services. And if any kind of benefit is received by employees from their employer,
Friends, that particular benefit is governed by salaries head and not from income from other sources. Always remember a basic principle that income from other sources head is applicable only when all other four heads are not applicable. The ESOPs are taxable in the hands of the employees, but as per provisions as provided by salaries head and not as per taxation of gift provisions. आते हैं फ्रेंड्स क्लॉज नंबर 10, where any person receives in any previous year from any person or persons on or after the 1st of April 2007, from any person or persons. तो अगर मुझे 10,000 रुपीज 10 पर्सन से मिलते हैं, मिस्टर ए 10,000 रुपीज दे रहे हैं मुझे, मिस्टर बी 10,000 दे रहे हैं, मिस्टर सी 10,000 दे रहे हैं, एंड इन द सिमिलर मैनर आई एम रिसीविंग रुपीज 1 lakh इन टोटल, that is 10,000 from 10 persons each. Friends, then aggregate need to be seen. And aggregate is rupees 1 lakh, which is more than 50,000. Then this 1 lakh is taxable in my hand. क्या receive हो रहा है? Any sum of money. Friends, money includes cash. That may be banking channel also. Without consideration. देखिए फ्रेंड्स, गिफ्ट वर्ड यूज नहीं किया. The aggregate value, aggregate का मतलब हर पर्सन का टोटल. So this means this section is need to be seen from the perspective of recipient. जिसको पैसे मिल रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव में देखना है. फ्रेंड, जिसको पैसे मिल रहे हैं वो असेसी है यहाँ पर, तो लॉ इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ असेसी. द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000 रुपीज, जिसकी एग्रीगेट वैल्यू कितनी है 50,000 से ज्यादा, then what will be the amount of taxability? कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? The whole of the aggregate value of such sum. What does that mean? Friends, if I am receiving in aggregate 40,000 rupees in previous year, full year, taxable nothing. But अगर aggregate receive हो रहा है 60,000, now what do you say? Is that 10,000 taxable or 60,000 taxable? हाँ जी फ्रेंड्स, लैंग्वेज क्या सजेस्ट कर रही है आपको? आपके सामने लैंग्वेज है. Where any person receives any previous year from any person or person on or after the 1st of April 17 any sum of money without consideration the aggregate value of which exceeds 50,000 rupees, the whole of the aggregate value of such sum. Very perfect answer, Mr. Kumar Subramaniam. Friends, in that case, whole of 60,000 is taxable. Yes, Ayushi, you are also right. So friends, as soon as your gift amount crosses the limit of rupees 50,000, the whole of the amounts gift taxable. Friends, here 50,000 is not exemption but a condition. Exemption नहीं है, एक condition है. तो ये कहना गलत होगा कि first 50,000 exempt होंगे. No. So that you have to take care of. आते हैं एसी पे. देखो आगे प्रॉपर्टी को अलग से डिस्कस करेंगे. Coming to this, provided that this clause shall not apply to any sum of money or any property receipt. Property को बाद में करेंगे. Shall not apply to any sum of money received from any relative. अगर आपको रिलेटिव से पैसे मिले हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. नाउ वट एवर द अमाउंट मे बी, if you even if you are receiving rupees 2 crore from your relative, friends, nothing is taxable in your hands. Nothing is taxable. तो रिलेटिव से जितना मर्जी मिले कुछ भी यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा. Now who all are covered up under the definition of relative? अब आप पूछेंगे इस रिलेटिव की परिभाषा में कौन आएगा? तो देखो यहां पर क्या लिखा. For the purpose of this clause, the expression relative shall have the same meanings as respectively assigned to them in explanation to clause 7. उन्होंने कहा पुराना जो गिफ्ट का प्रोविजन था वहां पर जो परिभाषा दी हुई थी आप उसे ही कंसीडर कर लें. तो वी विल गो बैक टू क्लॉज नंबर 7 एंड विल चेक आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव. रिलेटिव मींस in case of an individual. Who is the individual here?
डोनी और यू कैन से रिसिपिएंट, जिसको पैसे मिल रहे हैं, जिसको पैसे मिल रहे हैं। हु इज द असेसी हियरिन? एक इंडिविजुअल, एक रिसिपिएंट के पर्सपेक्टिव में सबसे पहले रिलेटिव कौन? स्पाउस। बहुत बढ़िया, हमें तो पता ही नहीं था कि स्पाउस रिलेटिव होता है। थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ब्रदर और सिस्टर, इंडिविजुअल मींस असेसी। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के असेंडेंट्स, इंडिविजुअल के डिसेंडेंट्स, ऊपर की पीढ़ी नीचे की पीढ़ी, एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस के असेंडेंट और डिसेंडेंट्स, और स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन आइटम्स बी टू एफ, या फिर जो ऊपर पर्संस लिखे हैं उन सबके स्पाउस भी यहां पर कवर्ड अप है। और एचयूएफ के केस में उसके मेंबर को क्या माना गया? रिलेटिव। इफ एनी मेंबर गिव्स एनी गिफ्ट टू द एचयूएफ देन दैट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एचयूएफ। फ्रेंड्स, ऊपर वाली डेफिनेशन को देखते हैं, द वे टू रिमेंबर। क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? whenever we have to check out whether a particular person is a relative or not, we have to go by this particular definition in detail. Friends, I have tried to derive a way by which in practical life, to the extent of 99% you can be assured whether the gift is taxable or not. एटलीस्ट वन साइड एश्योर हो जाओगे कि हाँ, ये वाला गिफ्ट टैक्सेबल तो नहीं होगा, कि इन लोगों से मिला है। तो हाउ हैव डिराइव्ड दिस पर्टिकुलर थिंग? फ्रेंड्स, फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस वी नो knowledge of Hindi language also. Like for example, individual who is recipient here, that is assessee herein, or we can say Mr. A. सबसे पहला रिलेटिव उनके लिए कौन है? स्पाउस। सबसे पहला रिलेटिव उनके लिए कौन है? स्पाउस। इन हिंदी वी से मिस्टर ए के पर्सपेक्टिव में देखें तो कौन? पत्नी। फिर दूसरा लिखा ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर, इन हिंदी वी से भाई बहन। फिर लिखा ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर। फ्रेंड्स, इस इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में इन ब्रदर और सिस्टर को क्या नाम दूं? किसी को आइडिया हिंदी में क्या बोलते हैं? इस इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में ये ब्रदर सिस्टर को हिंदी में क्या बोला जाता है? फ्रेंड्स, इन हिंदी भी से साला, साली, यही होता है। फिर क्या लिखा? पेरेंट्स। अभी पेरेंट्स को कवर अप नहीं किया। पेरेंट्स में कौन आए? पिता, माता, इनके ब्रदर सिस्टर, पिता के ब्रदर और सिस्टर, इन हिंदी भी से ताऊ जी, चाचा जी और बुआ। माता के ब्रदर सिस्टर, इन हिंदी भी से मामा जी और मौसी। देन क्या लिखा? इंडिविजुअल के असेंडेंट और डिसेंडेंट्स, इंडिविजुअल के असेंडेंट्स पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? दादा, दादी, नाना, नानी। और ऊपर डिसेंडेंट, सन, डॉटर, क्या बोला जाता है इनको? बेटा, बेटी। और नीचे चलो, ग्रैंड चिल्ड्रन, इन हिंदी भी से पोता, दोयता और पोती और दोयती। दीज आर वर्ड्स बीइंग यूज्ड। और इन सबके स्पाउस, और इन सबके स्पाउस।
तो फ्रेंड्स इनके स्पाउस की बात करें तो हिंदी में शब्द अवेलेबल हैं, क्या वर्ड यूज होते हैं? भाभी, बहनोई या जीजाजी। यहां पर जाते हो तो क्या वर्ड यूज होता है? सलहज, साढ़ू। फ्रेंड्स यहां तो कवर अप है ऑलरेडी स्पाउस। इनके स्पाउस वी ऑल नो, ताई जी, चाची जी, फूफा जी। यहां पर मामी जी, मौसा जी। यहां पर क्या होता है? बहू या दामाद। तो इन सबके स्पाउस भी यहां पर कवर्ड अप है। इंडिविजुअल के असेंडेंट डिसेंडेंट, स्पाउस के फ्रेंड्स ये रह गए यहां पर असेंडेंट्स। तो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में क्या कहलाएंगे? सास, ससुर। अब ये मेरे हिसाब से ड्राफ्टिंग एरर है फ्रेंड्स। यहां पर ध्यान से देखो क्या लिखा। ये देखो क्या लिखा, इंडिविजुअल के असेंडेंट डिसेंडेंट, स्पाउस के असेंडेंट और डिसेंडेंट्स। फ्रेंड्स स्पाउस के असेंडेंट्स तो डिफरेंट होंगे बट डिसेंडेंट्स तो यही होंगे। तो आई थिंक दैट इज अ ड्राफ्टिंग एरर विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग एज ऑन डेट। तो फ्रेंड्स ठीक है, उस चीज को इग्नोर करते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट फ्रेंड्स अ डेफिनेशन टू रिमेंबर व्हाट द वे आई हैव डिराइव्ड, if in a Hindi language, if I can explain the relationship from the perspective of the recipient in single word, if I can explain the relationship in Hindi language by way of single word, all such relationships are covered up under the definition of relative for the purpose of section 56 to 10. But there must be a single word in Hindi. Like for example, if I talk about friends, grandparents के brother sister. In practical life, we say Dadaji or Dadiji. But if I introduce someone as that he is my Dadaji, whether the true picture is clear to him? No. True picture clear नहीं हो रही है. So friends, that particular brother sister of my grandparents are not covered up here. आगे आते. Like for example, इनके son और daughter, ये covered up नहीं है. इनके son और daughter, friends, from the perspective of individual, they are cousin, but that is an English word. हिंदी में कैसे डिफाइन करोगे? प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहते हैं ये मेरा भाई है, बट क्या ट्रू रिलेशनशिप क्लियर हुआ? नो. नाउ टू एक्सप्लेन द ट्रू रिलेशनशिप वी यूज द वर्ड ममेरा भाई, कि ये मेरा ममेरा भाई है, मोसेरा भाई है. These words we use. But now to explain clearly, we have to use two words, mamera and then bhai. So whenever two words are required, they are not covered up here. The only requirement is that there must be a single Hindi word. Now there are two exceptions to that. Friends, if I talk about इनके बच्चे और इनके बच्चे, now in Hindi we have a single word, भतीजा, भतीजी, भांजा और भांजी. भतीजा, भतीजी, भांजा और भांजी. In English we say nephew or niece. Friends, although single word is available in Hindi, but they are not covered up by the definition of relative. So now we can derive a single language definition is that the relative means for any person from the perspective of SSC, which can be defined by a single word in Hindi except nephew or niece. Except nephew or niece. I hope this is clear to you friends. क्या इस तरीके से definition याद हो सकती है? एंड फ्रेंड्स 99% केसेस जब आपके सामने ये क्वेरी आएगी कि मैं इससे गिफ्ट ले सकता हूं या नहीं ले सकता, यू हैव टू चेक आउट दैट रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसिपिएंट. ये ध्यान रखना, रिसिपिएंट के पर्सपेक्टिव में. एंड इन 99 केसेस आउट ऑफ 100 यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि हाँ ये गिफ्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं. फ्रेंड्स मैं आपसे क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं कि यहां पर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसिपिएंट यू नीड टू चेक आउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसिपिएंट. फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर रिसिपिएंट अपने चाचा से गिफ्ट ले सकता है, अपने मामा से गिफ्ट ले सकता है, बट जिनके लिए ये चाचा है
या जिनके लिए ये मामा है उनको गिफ्ट दे नहीं सकता, और सॉरी उनसे गिफ्ट ले नहीं सकता। तो मैं अपने चाचा से गिफ्ट ले सकता हूं, बट मैं अपने भतीजे से नहीं ले सकता। तो उस भतीजे के लिए मैं चाचा हूं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसिपिएंट यू नीड टू चेक व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप। तो मैं अपने चाचा से गिफ्ट ले सकता हूं, बट अपने भतीजे से गिफ्ट नहीं ले सकता। बट भतीजा मुझसे ले सकता है क्योंकि मैं उसके लिए चाचा हूं। तो द लॉ हैज टू बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ assessee. Who is the assessee herein? फ्रेंड्स, हमने ये डेफिनेशन देखी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेल इंडिविजुअल। अगर आप फीमेल इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो थोड़ा सा फर्क सिर्फ यहां पर आएगा, बाकी ऊपर नीचे वाले रिलेशनशिप सेम रहेंगे। यहां पर अगर फीमेल रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो स्पाउस कहलाएगा पति, एक फर्क ये आएगा। दूसरा, खुद के भाई बहन तो भाई बहनी कहलाएंगे, भाभी बहनोई जीजा जी कहलाएंगे। बट जो हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर हैं उनको हिंदी में हम कहते हैं जेठ जेठानी, देवर देवरानी और ननंद और नंदोई। जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननंद और नंदोई। Is that clear, friends? Any doubt or query in relation to the taxation of gift we have discussed up to this extent? इस एक्सटेंट तक जो हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, यहां पर कुछ भी डाउट और क्वेरी है तो आप पूछो। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क फ्रेंड्स? चल सकते हैं आगे? कैन वी प्रोसीड विथ? थैंक यू रमेश जी फॉर द कंफर्मेशन। सो फ्रेंड्स, पहला एक्सेप्शन था कि अगर आपको गिफ्ट रिलेटिव से मिलता है तो नथिंग इज टैक्सेबल। सेकंड इज ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। अगर एक इंडिविजुअल की मैरिज है तो उस इंडिविजुअल को अगर कुछ मिलता है तो दैट इज नॉट टैक्सेबल फ्रॉम whom, फ्रॉम एनी पर्सन। थैंक यू राजीव जी फॉर द अप्रिसिएशन ही सिंग, थैंक यू सर फॉर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, इंडिविजुअल की मैरिज के ओकेजन पे अगर उस इंडिविजुअल को कुछ मिलता है तो नथिंग इज टैक्सेबल फ्रॉम whom, फ्रॉम एनी पर्सन। तो आप कहोगे जी शादी के समय जो लिफाफे मिले, आर दे एग्जेम्प्ट? यस फ्रेंड्स, दे आर नॉट एट ऑल टैक्सेबल। और फ्रेंड्स, ओकेजन ऑफ द मैरिज लिखा है तो इट्स नॉट नेसेसरी ऑन द डे ऑफ मैरिज इटसेल्फ। ओकेजन ऑफ द मैरिज जनरली अगर मैं अपने कस्टम्स में बात करूं तो 2 से 3 दिन 4 दिन चलता है। तो 2 3 दिन 4 दिन में जो भी मिलता है दैट इज नथिंग टैक्सेबल फ्रॉम whomsoever you have received। बट किसको मिलना चाहिए? जिस इंडिविजुअल की मैरिज है। जिस इंडिविजुअल की मैरिज है अगर उसके पेरेंट्स को मिलता है तो फ्रेंड्स दैट इज टैक्सेबल, दैट इज नॉट आउटसाइड द परव्यू ऑफ सेक्शन 56 to 10। अब इसमें किसी को कोई टैक्स प्लानिंग दिमाग में आ रही है? एटलीस्ट वंस टाइम, वंस इन ए लाइफ टाइम, वंस इन ए लाइफ टाइम। मैं नहीं मान के चल रहा कि इस टैक्स प्लानिंग के चक्कर में पता चला कोर्टों के चक्कर काट रहे हो। आयुषी जी कह रहे हैं जी बिल्कुल टैक्स प्लानिंग दिमाग में आ रही है। एंड फ्रेंड्स, नो डाउट द पीपल थिंक ऑफ एट दिस पर्टिकुलर टैक्स प्लानिंग। हमारे पास क्वेरीज पूछने आते हैं, भाई साहब एक काम करते हैं, देखो घर में मैरिज है बच्चे की। बिल्कुल है जी, बढ़िया बात है, बधाई हो, मिठाई का डिब्बा लाओ। कहते जी एक काम करें जी, मैरिज है 14 जुलाई को, हम एक काम करते हैं 16 जुलाई को बैंक जाते हैं और 5 करोड़ रुपए वहां पे डिपॉजिट कर देते हैं कैश में। मैंने कहा जी कर दो, कौन मना कर रहा है? कहते नहीं 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 जी, इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा जी बिल्कुल प्रॉब्लम है, आप बताओ ये 5 करोड़ रुपए कहां से आए? यू नीड टू एक्सप्लेन द सोर्स। अगर आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं करोगे तो सेक्शन 68 to 69 डी आर देयर एंड यू विल बी दैट लेवी टू टैक्स ऑन दिस पर्टिकुलर 5 CR। कहते सोर्स है ना, बताया तो सही आपको 14 जुलाई को मैरिज है। तो हम ये कहेंगे जी मैरिज के समय ये तो शगुन आया, द एनवलप्स, दैट आशीर्वाद, गुड विशेस आर रिसीव्ड। मैंने कहा जी बढ़िया बात है, 5 करोड़ रुपए, बहुत बढ़िया। कहते जी कर लेते हैं। मैंने कहा जी कर लो, बस एक बार ना मुझे अपनी ITR दिखा दो फैमिली की।
फ्रेंड्स फैमिली की आईटीआर देखी तो मैंने देखा कि उनकी एनुअल इनकम एज पर आईटीआर इज समथिंग लाइक 20 to 30 लाख रुपीस। कहते जी ठीक है। मैंने, आपको क्या लगता है कि आपको जो शगुन मिलेगा वो कितने रुपए का होगा पर फैमिली? कहते जी कोई 500 दे के जाएगा, कोई 1100 दे के जाएगा, कोई 2100 दे के जाएगा, रेयर सर्कमस्टेंसेस में कोई 5100 दे जाएगा। मैंने कहा जी चलो, यही है आपके डिनोमिनेशन। मैं एवरेज साइज मान लूं 2000 रुपए, एवरेज 500, 1100, 2100 और 5100 का एवरेज, कहते जी मान लो। तो इसका मतलब अगर आप कहते हो शादी में 5 करोड़ रुपए मिले और 2000 रुपए पर फैमिली मिले, 5 करोड़ में जीरो लगा लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, ये 3 से 3 कट गए, 55 याद आ गया मेरे को, और 2 से 50 काटा तो 25,000। इसका मतलब यू वुड बी रिसीविंग 25,000 एनवलप्स, 1 एनवलप पर फैमिली। इसका मतलब आपकी शादी में कितनी आई? 25,000 फैमिलीज। अच्छा जी, एक फैमिली से कितने आदमी आएंगे जी? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। मैंने कहा जी एवरेज दो मान लूं। कहते जी एवरेज दो ज्यादा ही होता है, चलो दो मान लो। मैंने कहा 25,000 फैमिली से एवरेज दो आए तो आपकी शादी में टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हुए? 50,000। मैंने कहा जी डिपार्टमेंट कहेगा मैं मान रहा हूं आपके घर में शादी थी और शादी में आपको 5 करोड़ रुपए आए होंगे, बट आपने जो बाराती आए, जो पार्टिसिपेंट्स आए, उनके लिए व्यवस्था तो करी होगी। आउट ऑफ 50,000 देयर मे बी लाइक 1,000 और 2,000 हु वुड बी स्टेइंग फॉर 1 or 2 days। आपने कहां ठहराया जी? वो होटल का नाम बताओ, हम देखें वहां पे इतने रूम्स हैं या नहीं है। एंड यू मस्ट हैव मेड अरेंजमेंट फॉर 50,000 persons, एटलीस्ट अ डिनर फॉर देम। आए होंगे, हम मना नहीं कर रहे, हमें तो वो बैंक्वेट हॉल बता दो जहां पर 50,000 लोगों की व्यवस्था थी और पर प्लेट कितने रुपए दिए। फ्रेंड्स ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन। फ्रेंड्स अब ये जो वो सॉरी, जो पार्टिसिपेंट्स आए होंगे इनके लिए उसने खर्चा किया होगा, और वो खर्चा फ्रेंड्स सेक्शन 69C कहता है इफ यू आर मेकिंग एनी एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का अगर आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, देन दैट एक्सपेंडिचर विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। तो फ्रेंड्स 5 करोड़ रुपए जमा करवाने से पर्पस पूरा नहीं होगा, जस्ट सेइंग दैट देयर वाज अ मैरिज। क्या राजीव जी क्या लिख रहे हैं? टैक्स फ्री फॉर रिसिपिएंट, but those paid marriage gift is called donation, consider in 80G paid marriage gift. What is that, Rajiv ji? I'm not able to get that particular aspect. What is paid marriage gift? So friends, अगर 5 करोड़ रुपए जमा करा तो you need to explain कि हाँ जी कितने बराती आए थे, and department can ask, you must have made the invitation to them to kindly give us the list. और फ्रेंड्स अगर आप कहते हो नहीं जी मेरे को तो पर एनवलप 1 लाख रुपए मिले, फ्रेंड्स यू नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द पर्संस हु हैव पेड रुपीस 1 लाख इन कैश टू यू। तो इट इज नोट सो कि हाँ एक हमें प्रोविजन दिखा और हम उसका बेनिफिट लेने बैठ गए। आगे चलो, अंडर अ विल, वसीयत के थ्रू किसी को कुछ भी मिल जाए, नॉट एट ऑल टैक्सेबल। बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस फ्रेंड्स लीगल हायर्स के केस में ही होता है। राजीव जी देखिए, अगर आप अपनी सिस्टर की मैरिज में इफ यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ रुपीज 51,000 टू योर सिस्टर, देखिए पहली बात तो वो मैरिज का पार्ट है, और दूसरा दैट इज फ्रॉम द रिलेटिव, एंड दैट इज फ्रॉम द रिलेटिव, तो वो तो दोनों एस्पेक्ट भी टैक्सेबल नहीं होगा। Inheritance. Ramesh is asking, what do you mean by the word inheritance means? Friends, for example, Mr. A dies. अगर उन्होंने विल बनाई है तो विल के हिसाब से असेट्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट। ओके, बट देर इज नो विल। नाउ व्हाट विल हैपन विद द असेट्स? दे गो टू लीगल हायर्स।
This is called inheritance. When someone dies without any will, then whatever his self-acquired assets are there, they are distributed to the legal heirs according to their personal decision or by way of court of law. So that is called by way of inheritance, कि आपको बिना will के थ्रू कोई assets मिले. तो अगर will या inheritance के थ्रू कुछ भी मिलता है, that is not taxable as part of income tax law. फ्रेंड्स, इसमें भी आगे एक प्रॉब्लम आती है. क्या आती है? प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो आई एम शेयरिंग विद यू एंड एज पर हिंदू लॉ. फ्रेंड्स देखिए, बाकी लॉज का मुझे आइडिया नहीं है. एज पर हिंदू लॉ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए हैविंग सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज. वो इनको डिस्पोज ऑफ करते हैं बाय वे ऑफ विल. किसको मिला? मिस्टर बी को. क्या मिस्टर बी इसको सेल कर सकता है? यस. क्या मिस्टर बी बाय वे ऑफ विल किसी और को दे सकता है? यस. कैन डू एनीथिंग. बट देयर इज नो विल एंड बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस ये मिल जाता है मिस्टर बी को. पॉसिबल है. क्या मिस्टर बी इसे सेल कर सकता है? क्या मिस्टर बी इसे बाय वे ऑफ विल डिस्पोज ऑफ कर सकता है? नो. सेल यस, बट विद रेस्ट्रिक्शंस. यस, यस, बट विद restrictions. Friends, basically, as per Hindu law, if any person receives any property by way of inheritance, in that property, the right is created of himself, his spouse, and his further generations. कल को अगर मिस्टर बी ये प्रॉपर्टी बेचते हैं तो इसके बच्चे इसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते थे, यू मस्ट हैव होल्ड फॉर आवर बेनिफिट. फ्रेंड्स, बच्चों का राइट भी क्रिएट हो जाता है. तो इट इज हाईली एडवाइजेबल कि अगर आपके पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं तो उसके लिए विल जरूर बनाएं. फ्रेंड्स, विल में लिख सकते हैं कि मेरे पास एज ऑन डेट ये दो प्रॉपर्टीज है, मैं इन दो को ऐसे देना चाहता हूं. बाकी जो भी मेरे असेट्स हैं या होंगे, वट एवर विल बी देयर इन फ्यूचर, बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर. So that everything of yours is getting distributed by way of will, then there will be no problem in future for the future generations. Friends, you can change your will at any point of time. बट उसमें स्पेसिफाई करो. दूसरा, विल के केस में जरूर लिखो कि मेरे किथ एंड किन्स रिलेटिव्स हैं कौन से जिनको ये जाएगा. फ्रेंड्स, आई हैव सीन केसेस जहां पे लिख दिया कि दैट आफ्टर माय डेथ माय ऑल द प्रॉपर्टीज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट माय चिल्ड्रन. अरे लिख तो देते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर एंड हु आर दे. Friends, in India, the still database are under progress and that may take time. If someone disputes that I am also a child of a particular Mr. A, then friends, the litigation goes on for 10 to 15 years to prove that there were only two children or three children. So it's highly advisable that in the will, that it is clearly specified that this is my spouse, this is her name, this is her Aadhaar number or PAN number, these are my children, A1, A2, A3, whatever, these are their आधार नंबर एंड पैन नंबर, और इनमें डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, आप उनको स्पेसिफाई करके लिख दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दैट इज ओके. एटलीस्ट कम से कम आउटसाइडर का डिस्प्यूट तो नहीं आएगा. इंटरनल डिस्प्यूट होंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. So that we should take care of. Is it clear, friends? So one thing being asked by Ayushi. Hindu law, legal heirs. Ayushi ji, kindly clarify your query regarding this cash withdrawal. How much cash we can draw in a day as per section 269 ST by company? What does that mean, Ayushi ji? I'm not able to get. From where you want to draw the cash? Okay.
Ayushi ji, from bank you can withdraw your cash. In that case, section 269 ST is not applicable. You are drawing your own money. That is your money which is deposited with the bank. That is your own money. You can withdraw any amount as you want. It may be subject to bank restrictions. That's a different thing. There is no legal restriction under the income tax law. Further, it is quite possible that what we have discussed 114E, if you are talking about that, we discussed in either first session or second session, that in case if you withdraw more than rupees 50 lakh in a from a current account, then that bank is supposed to report it to the income tax department. So IOCs are asked regarding the if there is a inheritance without will, then what is the concept? By will, anyone can dispose of any self-acquired property to anyone. Like for by way of will, my self-acquired properties I can dispose to any person, whether he is my relative or not does not matter at all. But if I die without will, in that case, my properties will devolve upon my legal heirs. Legal heirs. Who are the legal heirs? That is provided by the Hindu law. That is general rules of succession in the case of males. Males के case में कैसे होगा succession? If there is no will, the property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provision of this chapter. Firstly, upon the heirs being the relatives specified in class 1 of the schedule. सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज किसके पास जाएगी जो क्लास 1 में कवर्ड अप है. किसमें कवर्ड अप है? क्लास 1. सेकेंडली, इफ देयर इज नो हेयर ऑफ क्लास 1, अगर क्लास 1 में मेरा कोई भी लीगल हेयर नहीं है, देन अपॉन द हेयर्स बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल, तो फिर उनके पास जाएगी जो क्लास 2 में है. मैं आगे डिस्कशन नहीं कर रहा यहाँ पे. नाउ हु आर हेयर्स ऑफ क्लास 1? क्लास 1 में करना आएंगे सन, डॉटर, विडो, मदर, son of a predeceased son, daughter of a predeceased son, son of a predeceased daughter. This is the list. तो इनके पास प्रॉपर्टी जाएगी. लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग 2 daughters. तो एज पर हिंदू लॉ उनका राइट कितना है? इक्वल 50-50%. बट दे कैन एग्री फॉर सम अदर रेशियो, दैट इज देयर म्यूचुअल चॉइस. बट अगर एग्री नहीं करेंगे तो एज पर लॉ उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा 50-50. Now the point arises, if I dies without will, तो मेरी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग 2 सन, तो उन दोनों सन के पास जाएगी 50-50. बट वो दोनों सन going to hold that property not only for themselves but for their future family also. That is called a joint family property. Indirectly वो क्या बन गई? एक HUF प्रॉपर्टी बन गई. तो वहां पर जब मेरे बेटे उस प्रॉपर्टी को बेचने जाएंगे तो देयर इज अ लीगल रेस्ट्रिक्शन कि फैमिली के बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं. उनके आगे के बच्चे, फैमिली मेंबर्स उस ट्रांजैक्शन को चैलेंज कर सकते हैं. So that's why I have made the advice that there should always be a will of each and every person. जैसे ही कोई थोड़ी सी प्रॉपर्टीज क्रिएट हो, मे बी मूवेबल, इमूवेबल, एक विल जरूर होनी चाहिए. दैट इज हाईली बेनिफिशियल. आई होप दैट इज क्लियर. आयुषी, व्हाट यू वांट टू आस्क? Let me share this file for your general knowledge if you want to that this particular file. Legal heirs. Friends, this file was prepared for some particular purpose of my official purpose, and I shared with you. Friend, this is the folder of mine. Whatever I make my research over the legal case laws, a particular section or a particular aspect, I keep on saving that particular my research in my computer. Like these are the sections list, like section 2 clause 22, 28A. According to the sections, I create the list, and whatever the relevant material I find out, I put in that particular folder. And again, on various topics, there could be like folders are there, like budget 2022. If anything is given by the government, that is there. If I find out some good presentations of any particular professional, I used to download and save in my computer. Then friends, these resources we have to create and maintain. There is a like I find one particular departmental directory, and it's very quite recent. That is of 21st of April 2021. I downloaded. So friends, you have to be good enough and sharp enough to maintain the database. Like every information is there in this particular departmental directory. Okay, let's come back to the topic. So friends, fourth one,
when this particular gift provisions are not applicable, in contemplation of death of the payer or donor, as the case may be. If that particular death is contemplated by the donor. Now, what is contemplation of death? Friends, contemplation of death means that a particular person is on deathbed. Or you can say he is ill, and because of this particular illness, that person feels that his death is nearby. He is ill, and because of that particular illness, he feels that his death is nearby. At that particular time, if he gives donation, not donation, I will say gift to someone, then that is also exempt. Now, this is not by way of will. This is not by way of inheritance. This is at the person is making the gift, considering that his death is nearby because of illness, then that gift is also exempt. That is not at all taxable in the hands of the recipient, but this is subject to some conditions, that this particular gifts come into existence only when this person dies. If this person does not die at all, if this person does not die at all, in that case, that this gift is not completed, then there obviously there is no question of taxability. If this person dies, but because of different illness, not because of this illness by virtue of his feeling the death, but because of different illness, again, that this particular gift does not come into existence. But in case it may be possible that it comes into existence because ultimately it dies, in that case it will be taxable. So that means this particular recipient need to establish that he received the gift by virtue of the aspect that there is a contemplation of death of the donor, and because of that particular illness he has died. So that medical documents must be maintained in this particular case. So that we have to take care of. Another interesting situation, it may be possible that this person dies before donor. Like for example, there was a movie Chupke Chupke, Rajkumar or Rajpal Yadav. इफ यू रिमेंबर, वो जहां पर वो शाहिद कपूर, करीना कपूर, देयर इज अ मूवी, उसके अंदर वो उसको रुपए देते हैं बहुत सारे देके आने के लिए। वहां पर वो जब वो ब्रीफ केस खोलता है तो इतने सारे रुपए देख के बेहोश हो जाता है। सेम थिंग में हैपन, लाइक दैट पर्सन इज हैविंग अ इंट्यूशन दैट इज गोइंग टू डाई इन अ शॉर्ट व्हाइल, और जिस पर्टिकुलर सर्वेंट ने उसकी हेल्प करी होती है वो लगता है कि इसने यार मेरी जीवन भर हेल्प करी है, आई शुड गिव समथिंग टू हिम। वो एक ब्रीफ केस निकालता है, उसमें 5 करोड़ रुपए उसको दे देता है इन कंटेम्पलेशन, एवरी डॉक्यूमेंट इज साइंड। बट जैसे ही वो ब्रीफ केस खोलता है, 5 करोड़ रुपए देख के उसको हार्ट अटैक आ जाता है। It is possible that the person receiving the gift dies before the donor. Whereas in that case, that gift is not at all gift. That does not come into existence. In that case, that gift is reversed. Gift is reversed. So when the gift is reversed, there is no question of taxability at all. तो ऐसे कोई केस में अगर डोनी को गिफ्ट मिल रहा हो तो उसको अपनी धड़कनें कंट्रोल में रखनी चाहिए। आइडियली जब तक डोनर की डेथ नहीं हो जाए उसको वो ब्रीफ केस ओपन नहीं करनी चाहिए। तो दैट इज अ कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। फ्रेंड्स, बाकी एस्पेक्ट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे एज पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। तो व्हाट वी हैव डिस्कस मनी गिफ्ट, कि अगर मनी गिफ्ट है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। नाउ आई एम कमिंग टू फ्रेंड्स मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज गिवन बाय क्लॉज नंबर 7। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मींस द फॉलोइंग कैपिटल असेट ऑफ द असेसी। असेसी कौन? डोनी। तो किसी भी प्रॉपर्टी का गिफ्ट तभी टैक्सेबल होगा जब वो डोनी के लिए क्या है? कैपिटल असेट है। अगर डोनी के लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है तो फ्रेंड्स 56(2)(10) अप्लाई नहीं होगा। दैट मस्ट बी कैपिटल असेट फॉर यू, नेमली इमोल प्रॉपर्टी, इसको हम अलग से देखेंगे। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने उस समय 10 लिख दिया। दीज आर टोटल 9 असेट्स। इसके अंदर एक नया ऐड कर दिया, वर्चुअल डिजिटल असेट्स। वर्चुअल डिजिटल असेट्स, दैट इज नथिंग बट योर क्रिप्टो करेंसी।
अगर 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का गिफ्ट मिलता है तो दैट इज टैक्सेबल फॉर यू एज पार्ट ऑफ सेक्शन 56 टू 10। क्रिप्टो करेंसी को मिला के 10 है यहाँ पे टोटल। तो अगर मैं इमोल प्रॉपर्टी हटा दूं तो उसके बाद कितने रह गए? 9। 2 से लेके 9 प्लस आगे आने वाला वर्चुअल डिजिटल असेट। तो अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टीज का गिफ्ट मिलता है तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। नाउ व्हाट इज द रेलेवेंट प्रोविजन? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लॉज नंबर 10 में यहाँ पर चलते हैं, आपका ये रहा, एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमोल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। आपको शेयर्स मिल गए, ज्वेलरी मिल गई बिना कंसिडरेशन के, द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000 रुपीज द होल ऑफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगर उसकी मार्केट वैल्यू पूरे साल में अगर देखें 50,000 से ज्यादा तो वो आपके लिए टैक्सेबल है। नो, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ज्वेलरी हैविंग वर्थ ऑफ रुपीज 2 करोड़ यू आर गेटिंग फ्रॉम 1.5 सीआर। आपको 2 करोड़ की ज्वेलरी कोई आपको 1.5 करोड़ में दे रहा है, यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ 50 लाख। तो फ्रेंड्स दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। एनी प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन, आपको मिली तो पैसे देके है, कंसिडरेशन देके, विच इज लेस देन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, बट वो उसकी मार्केट वैल्यू से कम है बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, और वो डिफरेंस कितना है? 50,000 से ज्यादा। द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड सच कंसिडरेशन, देन दैट डिफरेंस विल बी टैक्सेबल फॉर यू। So if you're receiving jewelry of having worth of rupees 2 crore for rupees 1.5 CR, then difference of 50 lakh will be taxable for you. Will be taxable for you. So friends, in case of movable property, the difference between the market value and difference and the consideration you are paying, that may be zero, that may be positive. If that difference is more than 50,000 rupees for the financial year, that is taxable for you. Same exceptions are applicable for property also, that is relative, marriage, will, inheritance, contemplation of death. फ्रेंड्स, एनीथिंग वुड लाइक टू आस्क प्रॉपर्टी के केस में अदर देन इमूवेबल? इमूवेबल पे मैं आता हूं, उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। एनीथिंग वुड लाइक टू आस्क फ्रेंड्स? प्रसन्ना जी, यू हैव रेज्ड हैंड, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मोस्ट वेलकम टू आस्क। Friends, try to unmute yourself whether you are able to do. I have given permission from this particular software. I'm trying this particular aspect first time. Try to unmute and speak. Mr. Ramesh, you have unmuted yourself. Okay, you have again. Mr. Yeah, Kumar, you have unmuted. Yeah. Yeah, Mr. Kumar, please speak. Yeah, it is very clear actually. I don't have any doubt. Okay. I'm just trying this particular feature, whether this particular feature works good or Yeah. not. Okay. I'm muting you all. We are not in favor of this particular feature at all. I'm just muting you at all. Ayush is asking if the donor does not die. In the case of contemplation of death of the pair, if the donor does not die, then in that case, this benefit cannot be taken. As per the law, the gift reverses. When the gift reverses, it is no more a gift. Still, the donor says that, okay, you keep the money with you, then it can be treated as normal gift. And if it is a normal gift, then it is taxable for the recipient, except in case if it is covered up by any other exception. Okay, friends, coming to the immovable property. Friends, when we talk about immovable property, there are two parties to that effect. And for that purpose, we will see section 50C also, जो बहुत हद तक आपको पता भी होगा practical life के अंदर. Now, in case of a transaction of immovable property, there are two persons, Mr. A, who is giving property to Mr. B. Immovable property. Purchase 8th of July 2012. Cost 5 lakh.
gift, that means consideration, nil. Circle rate, also called stamp duty value, मेरे ख्याल से ये सबको पता होगा, stamp duty value, or also called area rates, is equal to 70 lakh. Mr. A is having an immovable property which was purchased by Mr. A long way back, 8th of July 2022, cost rupees 5 lakh. As on date, if I talk about, he's gifting that particular property to Mr. B, whose consideration is nil. Gifting means that consideration is nil, and circle rate or stamp duty value or area rates are rupees 70 lakh. I think you all must be knowing the concept of circle rate or stamp duty or area rates. State government एक आपको stamp duty levy करने के लिए rate fix करती है. Now, for example, 11th of November 2022. Now, Mr. A is making a immovable property gift to Mr. B, and I'm taking two situation. Case one, they are relatives. They are relatives, or maybe any other exception you can take, that it is a by way of will or inheritance or occasion of the marriage or whatever the exception you want to take. Now, what will happen in the hands of Mr. A in financial year 22-23, the year in which he's making the gift? No taxability. When he is making the gift, there is no taxability. That is section 47 clause number 3. And 47 clause number 3, any transfer of any asset by way of gift is not taxable in the hands of the transfer. वहां पे gift word use किया है, और gift का मतलब होता है without consideration, without any consideration at all. तो Mr. A के हाथ में कोई taxability arise नहीं होगी. What about Mr. B in financial year 22-23? Anything taxable by virtue of section 56(2)(10)? No, because it is received from relative, और relative से gift मिलेगा तो वो taxable नहीं होगा. Now, for example, Mr. B in financial year 26-27 transfers this property for 1.5 CR. 26-27 में मिस्टर बी इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं फॉर 1.5 CR. Then what will happen for Mr. B in financial year 26-27? Friends, there will be calculation of capital gains. कैपिटल गेन में सेल्स प्राइस कितना लिया जाएगा? 1.5 CR माइनस कॉस्ट कितनी ली जाएगी? Friends, in case there is a gift which is not taxable as part of 56(2)(10), then cost of the previous owner becomes the cost in the hands of the current owner. तो यहां पर कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 5 लाख रुपीस. कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 5 लाख कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, और इसका इंडेक्सेशन किया जाएगा. We all know indexation, concept of indexation. Income tax law provided indexation indices. तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 का इंडिसेस लिया जाएगा, और डाउन में क्या लिया जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 12-13 का इंडिसेस, जब प्रीवियस ओनर ने ये असेट एक्वायर किया था. बेसिकली मिस्टर बी इज सब्स्टिट्यूटिंग मिस्टर ए फॉर ऑल पर्पसेस. तो इंडिसेस कब का लिया जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 12-13 का. तो मिस्टर बी विल गेट ईच एंड एवरी बेनिफिट विच मिस्टर ए वाज एंटाइटल्ड फॉर. तो अगर रिलेटिव्स के बीच में गिफ्ट है, फ्रेंड्स, देयर इज नो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, नो टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर बी, बट व्हेनेवर मिस्टर बी इज गोइंग टू सेल आउट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, देयर विल बी अ टैक्सेबिलिटी, एंड इन दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अलाउड एज 5 lakh and not 70 lakh. Please remember this, and not 70 lakhs. Coming to another aspect, friends, same example I am continuing. Mr. A फाइनेंशियल ईयर 12-13 5 लाख रुपए, 11 नवंबर 2022, कंसिडरेशन नील, सर्कल रेट 70 lakh. Mr. B, he sells out financial year
26-27 सेल 1.5 CR possible है. Now I am assuming case 2 not relatives. By word not relatives I mean there is no exception applicable. That means this gift is taxable. सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मिस्टर ए के लिए क्या होगा? नो टैक्सेबिलिटी. फ्रेंड्स, एज पर सेक्शन 47 क्लॉज 3, गिफ्ट रिलेटिव को दिया या अदर देन रिलेटिव को दिया डज नॉट मैटर एट ऑल. इट डज नॉट मैटर टू whom गिफ्ट हैज बीन गिवन. If it is given as a gift that is without consideration, then nothing is taxable in the hands of the donor. Nothing, whether it is relative to or not. But coming to Mr. B, in financial year 22-23, क्या सेक्शन 56(2)(10) में कुछ भी टैक्सेबल होगा? Yes, friends. Now this is not from relative. There is no exception applicable. Whether the circle rate is more than 50,000, yes. Now Mr. B is getting benefit of more than 50,000, that is 70 lakh. This 70 lakh will be treated as part of income under section 56(2)(10), that is income from other sources. Is that clear, friends? ये 70 लाख मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल होंगे. नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 26-27, capital gain heads will be applicable. Now Mr. B is selling this particular property. What will be the consideration? Friends, consideration will be 1.5 CR minus cost. फ्रेंड्स, अब यहां पर इस अमाउंट को कॉस्ट मान लिया जाए. Although on 70 lakh he has paid the tax, but this 70 lakh will be treated as cost in the hands of the Mr. B, and it will be indexed by indices of financial year 26-27 divided by financial year 22-23. Indirectly I will say, ये assume किया जाएगा कि मिस्टर बी ने ये प्रॉपर्टी 70 lakhs में एक्वायर की थी इन फाइनेंशियल ईयर 22-23. क्या की थी? एक्वायर की थी इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, एंड अकॉर्डिंगली ऑल कैलकुलेशंस विल बी मेड. इज दैट क्लियर, फ्रेंड्स? ये समझ में आया? ये बताओ. एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क अप टू दिस पर्टिकुलर स्टेज? अभी हमने एग्जांपल लिया दैट मिस्टर ए हैज ट्रांसफर्ड इमोल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन. Now we are moving towards that Mr. A is transferring the immutable property, but with consideration, but that consideration is less than circle rate, which is provided by the state government. So friends, indirectly there is no double taxation if I talk about. क्या हो रहा है? देखो पहले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है. यहां पर कॉस्ट 5 लाख है, आज कुछ भी टैक्सेबल नहीं हुआ, बट फ्यूचर में टैक्सेबल हो गया क्योंकि कॉस्ट 5 लाख मिली. सेकंड एग्जांपल में अगर आज 70 लाख पे टैक्स लिया तो ये 70 लाख क्या बन गई? कॉस्ट. तो इसका मतलब देयर इज नो डबल टैक्सेशन. द डिफरेंस इज ओनली इन द टर्म ऑफ ईयर, कि किस ईयर में आपको टैक्स देना है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. अगर आप रिलेटिव्स नहीं हो तो टैक्स गवर्नमेंट ने आज ही ले लिया, और अगर आप रिलेटिव्स हो तो वो टैक्सेबिलिटी क्या हो गई? डेफर हो गई. टैक्सेबिलिटी क्या हो गई? डेफर. Now let's move towards the aspect when Mr. A is selling the property but less than a circle rate. Same example I am taking, friends. Mr. A, financial year 12-13, purchase 5 lakh. खातिरबंदी, there is no double taxation. देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जब रिलेटिव्स थे तो मिस्टर बी के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगा. कॉस्ट कितनी मिली? 5 लाख. इफ आई फोरगो द इंडेक्सेशन टाइमिंग, कैपिटल गेन कितना आया? 1.45 CR. Now Mr. B is supposed to pay tax on 1.45 CR, but in financial year 26-27. In this example, if I say यहां पर कैपिटल गेन कितना आया? 80 lakhs. तो अल्टीमेटली अगर मैं टैक्स देखूं तो कितना हुआ? 70 + 80, दैट इज 1.5 CR.
more or less same, 2-5 लाख रुपए का डिफरेंस है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कातिरवन जी, आई एम कमिंग टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन, अभी मैंने वो डिस्कस नहीं किया है 50C। अभी मिस्टर ए ने जो असेट दिया था दैट वाज विदाउट कंसिडरेशन, देयर वाज नो कंसिडरेशन एट ऑल। Now, Mr. A in financial year 12-13 purchased a particular immovable property for 5 lakh rupees, and he is giving that property to Mr. B on 11th of November 2022. Consideration 46 lakh. Circle rate 70 lakh. Now, Mr. A is selling the property to Mr. B. Selling the property. But for less than circle rate. वो 70 लाख से कम में बेच रहे हैं, that is 46 lakh. Now, first of all, taxability for Mr. A. In financial year 22-23. Friends, capital gains need to be computed क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है. Capital gains need to be computed. But now, whenever we have to compute the capital gain, first of all, we have to find out sales consideration. Now, in sales consideration, actual sale consideration is 46 lakh, but circle rate is 70 lakh. Now, friends, in terms of section 50C, there is a section 50C part of capital gain side that says in the hands of the transferor, जो property बेच रहा है in the hands of the transferor, the sales consideration for the calculation of capital gains will be actual sales consideration or circle rate, whichever is higher. Actual sales consideration or circle rate, whichever is higher. In terms of section 50C, the full and final consideration will be treated as 70 lakhs. Although Mr. A is receiving 46 lakh, but for the purpose of calculation of tax, sales consideration will be treated as 70 lakhs. He need to pay tax on excess of 24 lakh minus cost of acquisition. कितनी कॉस्ट थी? 5 लाख. इसका इंडेक्स किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल ईयर 12-13. जो भी गवर्नमेंट ने इंडिसेस दे रखे हैं या प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगा एंड डिफरेंस विल बी कॉल्ड कैपिटल गेन्स. So if Mr. A is selling the property for less than circle rate, then the capital gains will be computed on the basis of the circle rate. And friends, this aspect is applicable whether sale is to relative or not. Does not matter. अगर प्रॉपर्टी बेची जा रही है, that is, it is not without consideration. मैं पैसे ले रहा हूं, तो फ्रेंड्स सेक्शन 50C लगेगा. whether I have sold it to relative or not does not make any difference. तो फ्रेंड्स यहां पर जो 24 लाख का डिफरेंस है उसके ऊपर अगर देखा जाए तो मिस्टर ए के हाथ में टैक्स लग गया. नाउ कमिंग टू मिस्टर बी. When we talk about Mr. B, case 1, that is relative. कि A और B आपस में क्या है? रिलेटिव है. अगर रिलेटिव है तो क्या फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 56-10 एप्लीकेबल होगा? नो. अगर आपको रिलेटिव से प्रॉपर्टी मिली है तो 56-10 एप्लीकेबल नहीं है. इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 देयर इज नो टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी, ऑल्दो ही हैज रिसीव्ड द प्रॉपर्टी फॉर लेसर कंसिडरेशन. ही इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ 24 लाख. 70 लाख की चीज 46 में मिल गई तो बेनिफिट तो है, बट स्टिल नथिंग इज टैक्सेबल. नाउ सेम एग्जांपल इन फाइनेंशियल ईयर 26-27 व्हेन देयर इज अ सेल फॉर 1.5 CR, क्या होगा? कैपिटल गेन्स विल बी कंप्यूटेड. सेल कंसिडरेशन कितना होगा? 1.5 CR माइनस कॉस्ट कितनी होगी? 46 लाख. अब उसने 46 लाख में खरीदी है फ्रेंड्स, 46 लाख में खरीदी है तो कॉस्ट कितनी मानेंगे? 46 लाख मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल ईयर 26-27 इंडिसेस डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल ईयर 22-23 इंडिसेस. जब खरीदी है तो पुराना प्रीवियस ओनर से कोई मतलब नहीं. एंड ऑन दिस अमाउंट
the Mr. B will be supposed to pay tax in financial year 26-27. Friends, ये clear है? पहले ये बताओ. Case 1. If any doubt is there, please ask me, friends. यहां तक कोई भी डाउट है, फिर मैं चलूंगा केस 2 व्हेन A एंड B आर नॉट रिलेटिव. उस केस में क्या होगा? फिर हम कातिरवन जी की एस्पेक्ट्स को भी एड्रेस करेंगे, जहां पर वो कह रहे हैं देयर इज डबल टैक्सेशन, तो उसको भी एड्रेस करेंगे. एनीथिंग वुड लाइक टू आस्क फ्रेंड्स? Okay, thanks, Ramesh ji. I should tap on my shoulder that I made you clear in a single explanation. Case 2, they are not relatives. Friends, not relatives का मतलब 56 to 10 की कोई भी explanation applicable नहीं है. Then what will happen in financial year 22-23? Friends, section 56 to 10 is applicable. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगा 70 लाख माइनस 46 लाख इज इक्वल टू 24 लाख, एंड दिस 24 लाख इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी. टैक्सेबल है. नाउ टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 26-27, देयर विल बी कैपिटल गेन्स. उसमें सेल्स कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? 1.5 CR माइनस कॉस्ट. फ्रेंड्स, अब इस 24 लाख पे टैक्स लग गया. मिस्टर बी के हाथ में डबल टैक्स नहीं होगा. तो ये जो सर्कल रेट है, जिसको यहां पर हमने 24 लाख को कंप्यूट करने के लिए बेस बनाया था, ये 70 लाख रुपीस यहां पर क्या बन जाएगी? कॉस्ट. मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल ईयर 26-27 डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल ईयर 12-13, सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 22-23 जब परचेज की थी. So there is no double taxation in the hands of Mr. B. मिस्टर बी के हाथ में यहां पर डबल टैक्सेशन नहीं है. जो 24 लाख पहले टैक्सेबल हुए थे, उसका बेनिफिट बाद में मिल गया. बट अगर रिलेटिव्स हैं, तो जो टैक्स यहां नहीं हुआ था, वो इनडायरेक्टली कब टैक्स हो जाएगा? जब सेल होगी, क्योंकि यहां पे कॉस्ट कितनी मिली? 46. तो इसका मतलब जो मिस्टर बी का 24 लाख का बेनिफिट हुआ है, वो आज नहीं तो कल टैक्सेबल तो होगा. आज नहीं तो कल टैक्सेबल तो होगा. नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ मिस्टर कातिरवन जी. फ्रेंड्स, अब अगर इस 24 लाख पे देखा जाए, तो देर इज डबल टैक्सेशन. Although there is a consideration flow of 46 lakh, but still Mr. A's capital gains are computed on the basis of 70 lakh. That means indirectly he paying tax on 24 lakh. And this 24 lakh is also taxable in the hands of the Mr. B, either in financial year 22-23 or in financial year 26-27. अगर रिलेटिव है तो बाद में टैक्सेबल होगा, रिलेटिव नहीं है तो आज ही टैक्सेबल होगा. So that means there is a double taxation on this 24 lakh, but in the hands of the different person. In the hands of the different person. फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे डबल टैक्सेशन है, बट वो नोइंगली डाले गए हैं, सो दैट गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि हमें डबल टैक्स चाहिए. गवर्नमेंट कह रही है बाय वे ऑफ डबल टैक्स हम ऐसी ट्रांजेक्शन्स को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं. तो दैट इज अ पर्पस. So this is a double taxation, but in the hands of the different person. तो इमोल प्रॉपर्टी अगर बेची खरीदी जा रही है फॉर कंसिडरेशन लेस देन सर्कल रेट, नॉट फ्री, तो फ्रेंड्स उस केस में डबल टैक्सेशन है, एंड दैट शुड बी टेकन केयर. फ्रेंड्स, देयर इज अ टू टाइप ऑफ डबल टैक्सेशन. जब हम नेक्स्ट सेशंस में, जो नेक्स्ट सैटरडे संडे है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो देयर इज टू टाइप ऑफ डबल टैक्सेशन. जो रेफरेंस आया उसके बेसिस में आपको बता दूं. वन इज कॉल्ड इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन, सेकंड इज ज्यूरिडिक्शनल डबल टैक्स. जब एक ही एसएससी मिस्टर ए पर, एक ही इनकम पर, सेम इनकम पर जापान में भी टैक्स लगे और इंडिया में भी टैक्स लगे, सेम इनकम सेम एसएससी, तो दैट इज कॉल्ड ज्यूरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिकल, एक इनकम, बट इस पर मिस्टर ए के हाथ में टैक्स लग रहा है जापान में,
और इसी इनकम पर मिस्टर बी के हाथ में टैक्स लग रहा है इंडिया में, तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन फ्रेंड्स, दिस जनरली हैपेंस इन द केस ऑफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स। कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, पता चला इंडिया में पुराना सिनेरियो देखूं तो कंपनी सपोज टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड, शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट, बट पता चला कि शेयर होल्डर जापान में रहते हैं और जापान में शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल, तो दैट इज इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन। पार्टनरशिप फर्म, फ्रेंड्स इंडिया में पार्टनरशिप फर्म से टैक्स लिया जाता है, पार्टनर्स के हाथ में प्रॉफिट शेयर एग्जेम्प्ट है, बट इफ यू गो बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद अमेरिका, फ्रेंड्स वहां पर पार्टनर से टैक्स लेते हैं, वहां पे फर्म से टैक्स नहीं लेते। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फर्म इंडिया में और उसके पार्टनर्स अमेरिकन रेजिडेंट हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन। और कुछ डीटी डबल ए इस चीज को अकाउंट फॉर करते हैं कि इकोनॉमिकल डबल टैक्सेशन भी ना लगे। ज्यूरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन तो फ्रेंड्स हर डीटी डबल ए में कवर अप है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मेरे पास रेफरेंस आया तो मैंने आपके साथ ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट शेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स एनीथिंग यू वुड लाइक आस्क अप टू दिस पर्टिकुलर स्टेज, यहां तक कोई पूछना है तो पूछो मेरे को। We have discussed section 50C. We have discussed section 56 to 10. Friends, 50C और 56 to 10 में कुछ particular aspects हैं जो हम कल discuss करेंगे. Tomorrow we are going to discuss some aspects are pending in that particular aspect. तो वो हम कल discuss करेंगे. तो जो the whatever we have discussed today, anything you would like to ask, most welcome. कुछ भी पूछना चाहते हो तो फ्रेंड्स इसमें कुछ एस्पेक्ट्स पेंडिंग है, स्मॉल एस्पेक्ट्स आर देयर व्हिच वी नीड टू टेक केयर इन प्रैक्टिकल लाइफ। उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, तो मैं उसको भी आपको एड्रेस करूंगा। तो टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट में मोर और लेस मैक्सिमम एस्पेक्ट्स वी हैव डिस्कस। एक तो जो प्रॉब्लम आती है वो, इसमें एक पार्ट आएगा सक्सेशन प्लानिंग का, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कैसे सक्सेशन प्लानिंग की जाए कि टैक्सेस कम लगे, दैट इज पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, नॉट अवॉइडेंस। 50C, 43CA, hardly 1 or 2 minutes aspect. 50CA, briefly we will discuss. These are the rules for valuation of fair market value. कि how to compute market value, ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, तो दिस इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। और फ्रेंड्स कल के लिए अगर मैं देखूं तो वी आर हैविंग अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स कंसेप्ट, ओके, सेक्शन 54 and 54F, loan transaction, cash transaction we have discussed, taxation of gifts that is under process, 54 and 54F जितना टाइम परमिट करेगा, succession planning we are going to discuss. फ्रेंड्स 50C का आज रेफरेंस आ गया, तो दिस इज मिक्स एंड मैच, वो सारा आ जाएगा आपका और कल के एस्पेक्ट में ही, ठीक है, दैट इज गुड एनफ फॉर टुमारो आल्सो। एंड फ्रेंड्स दीज आर सेक्शंस आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपको मजा आने वाला है डेफिनेटली, आई एम सेइंग। इसके साथ साथ हम पेनल्टी के प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे, और कल आपके सामने कंसेप्ट आएगा जहां पे अगर आपने 100 रुपए की इनकम छुपाई, नॉट टैक्स, 100 रुपए की इनकम पे टैक्स बनता है 30 रुपीज, इफ यू आर ट्राइंग टू हाइड योर 100 रुपीज इनकम, इट मे बी पॉसिबल दैट गवर्नमेंट चार्जेस यू विद टैक्स प्लस पेनल्टी इक्वल टू 138 रुपीज। फॉरगो द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपनी जगह, टैक्स प्लस पेनल्टी इक्वल टू 138 रुपीज फॉर हाइडिंग द इनकम ऑफ रुपीज 100, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। और क्यों गवर्नमेंट को ये प्रोविजन बनाना पड़ा, 138 रुपीज फॉर 100 रुपीज, मतलब जितने कमाए उससे ज्यादा देने पड़ेंगे। सर इफ मिस्टर ए डन a will and his property in the name of Mr. B, but before A B dies, what will be the impact? Okay, Ramesh is asking a query that Mr. A has prepared a will, and according to the will the property will go to Mr. B, but actually what happens that Mr. B dies before Mr. A. Friends, in that case, if Mr. B dies before Mr. A and the will is not changed, I'm assuming that Mr. A did not change the will, and later on Mr. A's will is checked out, he says that the property will go to Mr. B, but Mr. B also does not survive. In that case, the property will be distributed as per Mr. B's will, if it is there, or if Mr. B will is not there, then in that case, by way of law of inheritance, it will be distributed to the legal heirs of Mr. B. But if Mr. A has provided some alternative in his will, some alternative will be like, for example, he said that my assets will be distributed to B, C, and D. Or in case someone does not survive, the remaining persons.
In that case, it will be distributed with C and D. Nothing will be given to Mr. B or Mr. B legal heirs in that case. So first of all, what we have to check out Mr. A's will, whether it provides some aspect in case Mr. B has died before Mr. A death, then accordingly it will be done. But if Mr. A will is totally silent in respect of any death of Mr. B, in that case, it will be treated as it is Mr. B's property, and according to Mr. B's will or law of inheritance, it will be distributed to the legal heirs of Mr. B. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow morning 8 o'clock. Till then, bye bye. Thanks a ton for patience listening and for making it interactive, friends. Today I enjoyed a lot as compared to first two sessions, that you keep on asking the queries. So it makes me engaged for 2.5 hours. Otherwise, friends, speaking alone, it is very difficult to speak as a single person, and when you do not find any sitting someone ahead. Thank you, friends. Bye bye. I am ending the session.